आईटी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग पार्ट 6। ये हमारा लाइव पार्ट 6 है। और आज के वीडियो में फिर हम एक बार आप से डिस्कस करेंगे आईटी रिक्रूटमेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और जिनका नॉलेज होना, अगर आप एक आईटी रिक्रूटर बनना चाहते हैं तो जिनका नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी होता है। ओके, सो बिना किसी देरी के हम आईटी रिक्रूटमेंट इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर्स को डिस्कस करते हैं। हाय फ्रेंड्स, ओके सो फ्रेंड्स, अगर एक आप आईटी रिक्रूटर बनना, इफ यू वांट टू बिकम ए आईटी रिक्रूटर, this is your decision will be right. And if as you become an IT recruiter, you can get good salary compared to other jobs. Okay, so IT recruiter job is a technical job, so you must have some technical knowledge. Okay, and if you want to become an IT recruiter, and if you belongs to other background, that also be good, but you must have technical knowledge about the different IT positions. Okay, so everyone should get technical knowledge. It's not bound to technical person. Okay, and you must have also bachelor degree. Bachelor degree maybe in any domain like arts, commerce, BSc, MSc, BA, BCom, any pharma degree, any technical degree, any non-technical degree. Okay. So today our first question is, what is Apache Axis? Okay. Apache Axis क्या है? What is the Apache Axis? So Apache Axis is a Java framework for web service. So Apache Axis is a Java framework. Okay, you have to remember Apache Axis is a Java framework. Our next question is, what is Clear Quest? Okay, so Clear Quest is a software tool for issue tracking. Okay, so Clear Quest is a issue tracking tool. Our next question is, what is Apache Camel? Okay, Apache Camel क्या है? So Apache Camel is a integration framework for Java. Okay, so you have to remember Apache Camel is a integration framework for Java. What is HDFS? HDFS क्या है? This is also important question. Okay, so HDFS is a distributed file system. Okay, this is a 3 keyword answer. Distributed file system for big data processing in Hadoop. Okay, our next question is, what is HBase? What is HBase? So HBase is a distributed NoSQL database for big data. So what is the HBase? HBase is a distributed NoSQL database. What is Bugzilla? Our next question is, what is Bugzilla? So Bugzilla is a bug tracking software or tool for managing software development issues. Okay, so Bugzilla is a bug tracking tool. Our next question is, what is SonarQube? SonarQube is a code quality management platform for development. Code management platform. What is the SonarQube? SonarQube is a code management platform.
What is ServiceNow? So ServiceNow is a cloud-based platform for enterprise management and automation. Okay. So what is ServiceNow? So ServiceNow is a cloud-based platform. So, hi, Trent, your brain. How are you? Okay. If you want to talk with me, so directly you can text me through LinkedIn. Okay, I will answer every time. Top link. What is the top link? So top link is a Java ORM framework. Please remember top link क्या है? टॉप लिंक एक जावा ORM फ्रेमवर्क होता है. ओके. ओके हैरी. Hey, hi Harry, how are you? And why top link used? Okay, it is used for mapping Java classes to relational databases. Is it possible to share contact number or WhatsApp? Okay. What is PCF? PCF is a cloud computing platform for building, deploying, and scaling application. What is PCF? So PCF is a cloud platform. Okay, cloud computing platform. What is PCF? PCF is a cloud computing platform. Sorry friends, थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है. What is SOAP UI? फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर दीजिएगा. What is SOAP UI? UI is a testing tool, okay, for web services and API advanced testing feature. Okay, so what is the SOAP UI? So SOAP UI is a testing tool. So SOAP UI एक प्रकार का टेस्टिंग टूल होता है जिसका कि यूज वेब सर्विसेज और एपीआई को टेस्ट करने के लिए किया जाता है. ओके. सो आपको इसी तरह हम जब भी लाइव करें आपको लाइव ज्वाइन करना है क्योंकि हम हमारे लाइव में काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन या टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे. अगर आप वीडियो को सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी. ओके. व्हाट इज MSMQ? MSMQ क्या है? So MSMQ is a messaging protocol for exchanging message between computer. So MSMQ एक तरह का मैसेजिंग प्रोटोकॉल होता है जो कि कंप्यूटरों के मध्य मैसेज या कम्युनिकेशन को एक्सचेंज करता है. Also good. So our next question is what is LAN? LAN. So LAN is a network of device in a small geographic area. Okay. So LAN एक प्रकार की नेटवर्क डिवाइस होती है. Okay. अगर लोकल एरिया नेटवर्क, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LAN? लोकल एरिया नेट. ओके. लोकल एरिया नेटवर्क. ओके. सो जो LAN होता है एक तरह की नेटवर्क डिवाइस होती है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज WAN? लोकल एरिया. लोकल एरिया नेटवर्क. ओके. सो व्हाट इज WAN? ओके. सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि WAN का फुल फॉर्म क्या होता है. ठीक है. So what is the WAN? Okay, so WAN is a computer network also. Okay, so WAN एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क होता है that covers large areas such as cities और countries. Okay, so जो WAN है इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क और ये किसी भी देश या किसी भी सिटी के एक वाइड एरिया को कवर करता है. ये एक प्रकार का नेटवर्क होता है. ओके. कंप्यूटर नेटवर्क होता है. Our next question is what is WLAN? WLAN. Okay. WLAN. Okay. So सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि WLAN का फुल फॉर्म क्या होता है. ठीक है. तो WLAN का जो फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. ओके. वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क.
Okay, and what is the WLAN? So WLAN एक वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क होता है. Okay, WLAN is a wireless computer network. Okay, WLAN is a wireless computer network. What is symphony? Our next question is what is symphony? So symphony is a framework, is a kind of framework which is used for developing web applications using PHP language. Okay. So जो symphony है ये PHP का एक framework होता है जिसका कि यूज एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए किया जाता है. ठीक है. इसमें PHP लैंग्वेज और MVC आर्किटेक्चर का यूज होता है. What is Laravel? Okay, I think you heard about the Laravel. Okay, so this is also one of the most important question. So Laravel is a PHP web framework. What is the Laravel? Laravel is a PHP web framework, application framework. Laravel एक तरह का PHP का वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क होता है. ओके. What is Gent? Our next question is Gent. फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है. What is Gent? So Gent is a PHP web application framework. Okay, for developing web application and services. Okay, what is the Gent? So Gent is a PHP web application framework. जिस तरह से Laravel एक तरह का PHP web application framework होता है, इसी तरह Gent भी एक तरह का PHP web application framework होता है. Our next question is what is WordPress? WordPress क्या है? So WordPress एक CMS होता है, Content Management System. Okay, for creating websites and blogs. So what is the WordPress? WordPress. Okay, so WordPress is a CMS. CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और इसका जो यूज है ये वेबसाइट और ब्लॉग्स को डेवलप करने में किया जाता है. ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिडक्स. ओके, सो रिडक्स इज अ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी फॉर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन विद predictable data flow. Okay, so what is the Redux? So Redux is a state management library for Java script application. Okay, so our next question is what is the Groovy? Okay, so Groovy is a dynamic programming language for Java platform. So Groovy, what is the Groovy? So Groovy is a programming language and backend technology for Java platform. Okay, so we have our next question is very important. What is QTP? Okay, and I think you have heard about QTP. If you are working as a IT recruiter or if you previously worked as a IT recruiter, definitely you when you work in any position, you came across with this keyword. Okay, or you counter with this keyword Groovy. Okay, so Groovy is a programming language. Sorry, QTP. Okay, so QTP is a test automation tool. Okay, what is the full form of QTP? Okay, so QTP is a test automation framework. Okay, so हम इसके full form को जान लेते हैं. क्विक, इसका जो full form होता है QTP का क्विक टेस्ट प्रोफेशनल. Okay, quick test professional. So Sheikh, can you please share something about medical devices? Friends, Sheikh, right now I'm covering IT part. Okay, so today my aim or objective is cover 100 questions and answers. Very important question. If you are joining this YouTube live, definitely you can get advantage and you can increase your IT technology knowledge or your IT recruitment knowledge. Definitely we also cover medical part, pharmaceutical part. Okay, I'm thinking about that and very soon we will start pharmaceutical part also. Sorry friends,
what is MS? Our next question is what is MS project? Okay, so MS project is a project management tool by Microsoft. Okay, so what is the MS project? So MS project is a project management. What is NGINX? NGINX. So NGINX is a web server and reverse proxy. So what is NGINX? NGINX is a web server and reverse proxy. Our next question is what is Magento? Magento. Okay, so Magento is a e-commerce platform written in PHP for building online stores. Okay, so there is. So what is Magento? So we have three things to share. So Magento is a e-commerce platform and which is written in PHP and which is used for developing online stores. But our next question is what is Cog Igniter? Okay, what is the Cog Igniter? Okay, so Cog Igniter is a web application framework. Okay, which is used for creating or developing fast and efficient web application. Okay, so what is Cog Igniter? Cog Igniter is a web application framework. Our next question is what is Joomla? Okay, so Joomla is a CMS and what is the full form of CMS? CMS का full form क्या होता है? CMS full form is Content Management System. अच्छा friends, tell me something. Should I cover pharmaceutical recruitment part and also non-IT recruitment part? If you say yes, definitely. Used for creating websites and web application. So Joomla एक प्रकार का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसका यूज वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन को बनाने में किया जाता है. ओके, our next question is what is Drupal? Okay, so what is the Drupal? Drupal is also CMS. So, Drupal is a content management system which is used for websites and web applications. Our next question is what is JMeter? Okay, so JMeter is a testing tool. Okay, load testing and performance measurement. Okay, okay, what is JMeter? So JMeter is a testing tool. Okay, okay, so what is the JMeter? JMeter is a load testing tool. Okay, so our next question is what is Dreamweaver? What is Dreamweaver? Okay, so Dreamweaver is a web design and development to a software used to create and edit HTML and CSS code visually. Okay, so what is the Dreamweaver? So Dreamweaver is a web design and development tool or software, and this is which is used for creating and edit HTML and CSS code visually. Okay, and next question is what is SQL server? So SQL server is a relational database management system used to store and retrieve data. Next question is what is REST API? Okay, so REST API is a type of web API which is used in HTTP for data transfer. Okay, so you can say REST API is a web API. And what is SSRS? So SSRS is a Microsoft tool which is used for creating and publishing report. Okay, so what is the SSRS? So SSRS is a reporting tool. Okay, simple answer. What is the SSRS? SSRS is a reporting tool. Hi Aditya, how are you? Sir, mostly consultant are preparing a remote position and don't want to relocate. Can you make a video on how to tackle this situation? Sure, definitely I will make video on this topic. What is XSD? Okay, so XSD क्या होता है?
XSD is a schema language, okay, which is used to describe and validate structure content of XML document. Okay, so what is XSD? If we say very simple answer, so XSD is a schema language. Our next question is what is ASP.NET? So ASP.NET is a framework which is used for developing web application and services using .NET platform. Okay, so what is ASP.NET? So ASP.NET is a kind of framework which is used for developing application and it's used .NET platform. Okay, it's work on .NET platform. And if you developer position, you will get this. You can see this keyword ASP.NET. Okay, and our next question is what is Active Directory? So Active Directory is a Microsoft service for managing network resources and user authentication. Okay, so Active Directory. So Puppet is a configuration management tool. Okay, our next question is what is Crystal Reports? So Crystal Report is a PI tool. Okay, so what is Crystal Reports? So Crystal Reports is a business intelligence reports. Okay, which is used for create, design and generate reports. जिसका कि use reports को develop करने में किया जाता है. Okay, so what is the big data? And data. Okay. That requires specialized tools and techniques for processing and analysis. What is Snowflake? Okay, so Snowflake is a cloud-based data warehousing platform. Okay, that's one. Okay, so we are talking about the Snowflake. Snowflake is a cloud-based data warehousing platform. Our next question is what is Ansible? So Ansible is a automated tool for IT infrastructure management. Okay, so Ansible जो है एक तरह का ऑटोमेटिक टूल होता है या डेवऑप्स टूल भी होता है. What is my Eclipse? So what is my Eclipse? So my Eclipse is a IDE. And what is the full form of IDE? Integrated Development Environment. Okay. What is Android Studio? Our next question is what is Android Studio? Android Studio is a IDE. Okay. Android Studio is an integrated development environment. Our next question is what is Neo4j? So Neo4j is a graph database. Okay, what is Neo4j? So Neo4j is a graph database that stores and process data as nodes and edge just for efficient and flexible. Okay. What is the app dynamics? What is the app dynamics? Okay, so app dynamics is a application performance monitoring and management software. Okay, application performance monitoring and management software or tool. What is IIS? Okay, IIS क्या होता है? Okay, IIS is a web server. Okay, and developed by Microsoft. So IIS is a web server. What is Workday SCM? So Workday SCM क्या होता है? So Workday SCM is a cloud-based human capital management software for managing HR function. So Workday HRM का जो यूज है ये HR functions के मैनेजमेंट के लिए किया जाता है और जो Workday SCM होता है ये एक तरह का क्लाउड ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है. What is Kanban? So Kanban is a visual project management system used to improve workflow and efficiency. So Kanban एक प्रकार का visual project management system होता है. What is Nagios? Nagios. So Nagios is a monitoring tool. Okay.
Okay, so Negio is a monitoring tool. What is Bamboo? So Bamboo is a continuous integration and deployment tool. Okay, so what is the Bamboo? So Bamboo is a continuous integration and deployment tool. What is Redshift? So Redshift is a data warehousing. Okay, what is Redshift? So Redshift. Okay, so what is Redshift? So Redshift is a data warehousing software. Okay, what is Pyramid? So Pyramid is a Python framework. Okay. Pyramid is a Python web framework. What is FTP? So FTP is a network protocol. Okay, which is used for transferring file between computer. So FTP is a network protocol. What is Flask? Flask is a web application framework. Okay, for Python. Flask is a web application framework for Python. What is JSON? JSON is a data interchange format. Please remember, JSON is a data interchange format. What is Scrum? So Scrum is a agile project management framework used for software development. Okay, so Scrum क्या होता है? Scrum एक तरह का agile project management framework होता है जिसका की यूज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किया जाता है. What is MongoDB? So MongoDB is a NoSQL database. What is MongoDB? MongoDB is a NoSQL database. What is IBM MQ? IBM MQ is a messaging middleware. Okay, messaging middleware. What is Rocket MQ? Rocket MQ क्या होता है? Okay, so Rocket MQ is a distributed messaging and streaming platform. So Rocket MQ is a distributed messaging SQL. So MS SQL is a RDBMS system. Okay, relational database management system. What is Core Java? So Core Java is a kind of functional programming language with basic set of libraries used for developing software application. Okay, so Core Java क्या होती है? Core Java एक तरह की बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. जावा का ही पार्ट होती है जिसमें कि कुछ सेट लाइब्रेरीज होती है जिनका की यूज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किया जाता है. What is Advanced Java? So एडवांस जावा है ये एक तरह के एंटरप्राइज लेवल प्रोग्रामिंग होती है जिसमें कि कुछ टूल्स होते हैं या सर्वलेट जेएसपी या जेडीबीसी इंक्लूड होते हैं. अब our next question is what are the difference between SDT and QA? Okay, SDT का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट engineer in test. Okay, SDT and QA are both involved in testing software. Okay, SDT and quality assurance दोनों टेस्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं बट SDT फोकस ऑन डेवलपिंग ऑटोमेटेड टेस्ट. ओके, सो SDT जो है इनका जो फोकस होता है ये ऑटोमेटेड टेस्ट के डेवलपमेंट पे होता है जबकि QA फोकस ऑन मैनुअल टेस्टिंग. जो क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट होते हैं क्वालिटी एनालिस्ट QA टेस्टर होते हैं ये एक तरह के इनका जो काम होता है मैनुअल टेस्टिंग हो. SDET की बात करें हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग टेस्ट तो SDET के पास प्रोग्रामिंग स्किल्स होती है. मतलब SDET जो होते हैं या SDET सॉफ्टवेयर कोडिंग कर सकते हैं या प्रोग्राम लिख सकते हैं.
और एसडीटी जो होते हैं डेवलपर्स के साथ काम करते हैं, जबकि जो क्यूए है, क्वालिटी एश्योरेंस, ये इनका जो मेन फोकस होता है, ये यूजर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूए एंड टेस्टर। ओके। जो क्यूए होता है, इसका जो काम होता है, यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा करता है, जबकि टेस्टर सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट को सर्च करने पर ध्यान देता है। क्यूए ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में इंक्लूड होता है, जबकि टेस्टर इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक टेस्ट केसेस और सिनेरियोज पर ज़्यादा फोकस करता है। व्हाट इज माइक्रो सर्विस। तो माइक्रो सर्विस एक प्रकार की अप्रोच होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। व्हाट इज टी एस क्यू एल। तो टी एस क्यू एल जो है, ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर्स प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। टी एस व्हाट इज द टी एसक्यूएल। सो टी एसक्यूएल इज ए माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर्स प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज द बैश। सो बैश इज ए यूनिक्स शेल एंड कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर। व्हाट इज विजुअल बेसिक। सो विजुअल बेसिक जो है, ये एक प्रकार की यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम डेवलप करने में किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क एक प्रकार के सेट ऑफ रूल्स होते हैं या गाइडलाइंस होती है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। व्हाट इज बग ट्रैकिंग। सो बग ट्रैकिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैकिंग एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर इश्यूज टू एंश्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो बग ट्रैकिंग सक्सेसफुल डेवलपमेंट को एंश्योर करने के लिए सॉफ्टवेयर इश्यूज को ट्रैक करने और मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। What is Splunk? So Splunk is a software platform which is used for searching, analyzing, visualizing machine generated data in real time for operational intelligence. What is firewall? Firewall is a system that monitor and control an outgoing network traffic based on predefined security rules. So firewall जो है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स के बेसिस पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर और कंट्रोल करती है। तो फायरवॉल का जो काम होता है, जो इनकमिंग या आउटगोइंग जो नेटवर्क ट्रैफिक होता है, इसको कंट्रोल और मॉनिटर करना। व्हाट इज टीसीपी आईपी। सो टीसीपी आईपी इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ओके, इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। What is the protocol? So protocols are the set of rules and procedures that guide communication and interaction between devices, system, and or individuals in a specific context. What is web server? So web server is a program that receives and responds requests over the internet for websites and web applications.
question is what is applet? So applet is a small application, okay, designed to perform specific tasks in large program or system. Okay, so applet एक प्रकार के छोटे सॉफ्टवेयर जिनका की काम जो बड़े सॉफ्टवेयर या सिस्टम होते हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना होता है. व्हाट इज मोचा? सो मोचा इज ए जावास्क्रिप्ट टेस्ट फ्रेमवर्क. व्हाट इज द मोचा? मोचा इज ए जावास्क्रिप्ट टेस्ट फ्रेमवर्क that runs on Node.js and in browsers. What is Eclipse Jersey? So Eclipse Jersey is a RESTful web services framework which is used for building API in Java. So what is Eclipse Jersey? So Eclipse Jersey is a RESTful web services framework. NUnit. So NUnit is a unit testing framework for .NET. Unit testing framework for .NET. What is VSS? So VSS is a version control tool. Okay. What is TestNG? TestNG is a testing framework. Okay. What is the TestNG? TestNG is a testing framework. What is PHP unit? So PHP unit is a unit testing framework for PHP code. What is JSP? So JSP is a Java technology for dynamic web content. So JSP का full form होता है Java Server Faces. Okay, Java Server Page, and this is a Java technology. What is Web Logic Server? So Web Logic Server जो होता है ये Java based application server होता है. What is JBoss? So JBoss is a Java based application server. What? So Jetty is also Java based web server and servlet container. What is Toad? Toad is a database management tool for developers and analysts. What is Toad? So Toad is a database management tool for developers and analysts. What is iBetis? This is our next question. So iBetis is a data mapping framework for Java and .NET application. So what is the iBetis? iBetis is a data management framework. What is Tomcat? So Tomcat is a web server and servlet container software. Okay, what is Tomcat? Tomcat is a web server and servlet container software. What is NetBeans? So NetBeans is a IDE, integrated development environment. What is LDAP? LDAP is a software protocol for accessing and managing directory services. Okay, so LDAP is a kind of software protocol. What is ClearCase? ClearCase is a software configuration management tool. What is JAX-WS? So JAX-WS is a Java API, okay, for creating SOAP-based web services. Java API. What is WSDL? So WSDL is a XML format which is used for describe web services for machine-to-machine communication. Okay. What is Windows XP? So Windows XP is a discontinued operating system. Okay. So friends, I hope you enjoyed this video. If you enjoyed this video, please like, subscribe and comment. Thanks for joining.